the hunger to earn more. In India, this is a very big problem. Parents here think that I will not allow my child to have a job. You would not find this outside India. यहाँ पे ये concept ना it is looked down upon. Rome was not built in a day. ये नहीं कि हर स्कैम में फंस जाओ जाके. But difference पता है क्या है? अगर आप side by side compare करोगे ना, they know how to sell themselves. Job title is a facade. Like don't get into job title shit. Hello everyone, I'm your host Ishita and welcome to my first ever YouTube series Freshers Shala. So इस सीरीज को स्टार्ट करने का हमारा मेन गोल फ्रेशर्स को उनके करियर ग्राफ में अपस्किल करने का है. So I'll be covering all your queries from the scratch top to bottom. And इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करेंगे जो आपको करियर, जॉब सर्च, इंटरव्यूज, रेज्यूमे, हाउ यू कैन डेवलप योर स्किल्स, हाउ यू कैन मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड हाउ यू कैन स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग इन योर फ्यूचर. इस सब को लेकर पूरी गाइडेंस एंड पूरी नॉलेज देंगे. एंड इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने बात करी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आज के टाइम में आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट एंड वायरल हो चुका है. द टॉपिक इज साइड हसल और द पैसिव इनकम. हाउ साइड हसल इज परसीव्ड बाय ऑल द एचआरस. जितने भी फ्रेश ग्रेड्स हैं, अगर वो इस एक इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं इन अ वेरी अर्ली स्टेज, हाउ दे कैन यूज इट एज देयर ओन एडवांटेज इन फ्रंट ऑफ द एचआरस. फ्रॉम योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग टू हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ ऑन योर रेज्यूमेज. अपने कॉलेज टाइम को किस तरह आप अपने स्किल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो. व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाइल गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज फ्रेशर्स मोस्टली बहुत तरह के स्कैम्स में फंस जाते हैं. सो ट्रेडिशनल इनकम सोर्सेज के बारे में बहुत बातें हो चुकी है, कॉलेज साइड चिक्स के बारे में बहुत बातें हो चुकी है. This podcast is just to cover how you can generate a side gig. And to kickstart our first ever episode, I have the most perfect guest for you all, Mrs. Charu Sharma, who's the founder of Hiring Blogs, a career coach and also the face behind a very renowned page, Career GPT. So इस podcast को end तक जरूर देखना and I'm damn sure that you guys are going to get a great insight of how you can start, what are the platforms and opportunities where you can dive into, आप अपना side hustle कहाँ शुरू कर सकते हो, and how you just need to start no matter what, because that is going to help you in your long-term future. So let's dive into the podcast. Welcome to my channel. Firstly, my first ever podcast. Thank you and congratulations. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम. और मैम आज मैंने एक्चुअली पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़्यादा आपके साथ इसलिए सोचा बिकॉज आई थिंक हमने जितना यूट्यूब आज स्क्रॉल कर लो कुछ है तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम को लेकर आई थिंक बहुत पॉडकास्ट हो चुके हैं. किस तरह मतलब आप नॉर्मल 9 to 5 जॉब्स में आप अपना किस तरह एनहांस कर सकते हो इनकम, उसको लेके बहुत पॉडकास्ट में बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं. आज मैं जिस टॉपिक को लेके बात करना चाहती हूँ, आई थिंक ये टॉपिक बहुत वायरल हो रहा है आजकल, इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइड इनकम, साइड हसल एंड पैसिव इनकम. एंड स्पेसिफिकली फ्रेशर्स की हम बात करें तो आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फ्रेश ग्रेड्स हैं, दे जस्ट डोंट वांट वन सोर्स ऑफ इनकम इन देयर लाइफ. उनको ये रहता है कि हमारे किस तरह कोई ऐसा सोर्स बने कि हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ रहें जिनसे हमारी इनकम जनरेट होती रहे एंड एक हमारा लाइफस्टाइल सारा लग्जरियस लाइफस्टाइल सारा स्पॉन्सर होता रहे. सो टुडे आई वांट टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस टॉपिक कि पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट जेन्युइनली इतना वायरल और रेलिवेंट है आज के टाइम में. Yes, and you have to understand this, that it doesn't start after you graduate. You need to start working or start your side hustles while you are in your college. So I tell all my candidates and all my students that start exploring things right from your first year of college. Go out, see what skills you already have, what skills you can build, and if you can get money out of those skills. Now the motivation can be money, but then you have to understand that those 3 years or 4 years of your graduation, whatever you are learning, you are getting money as well as getting the skills. So learning and earning together. It's ikatha ek sarah I remember when I'll tell you my story. So when I did my 12th, right after my 12th, I started looking out for options to start earning. So आपका साइड हसल तब स्टार्ट हो गया. हाँ, my first side hustle was I reached out to coaching institutes and I proposed that I could be a tutor for the So I remember I started teaching 9th, 10th these guys biology, and then it was very small amount of money but that gives you number one the hunger to earn more, and number two to put yourself out there to see. You will
first get a reality check when you go out and Like you put your step on the field first. yes, You know? sell yourself. You have to understand from day one to like your entire career. You have to understand that the one thing that you do the most is selling yourself. In every role, you'll be selling yourself. So start early. Start while you are in your graduation. Start telling people what you can do for them. Don't talk about yourself. Talk about what value you can bring to them, what impact you can create for them. And if you have that sort of skills, great. If you don't, we are in a era जहाँ पे सब कुछ available है. Go on YouTube, जो भी interesting आपको लग रहा है, जहाँ आपको लगता है कि this is something that I can explore. Start exploring. There are multiple options. So for me, my idea of side hustle or passive income, it should start as early as possible, and it should not be just to earn money. It should be to like. But ma'am, just like you mentioned, you need to start early. That was like literally going to be my second question. That starting early for a fresh grad or for a student is like a red flag or a green flag. Like ideally a person should start like with a traditional income, or is it a good thing to start with like a side This is a income? problem that I feel in India, this is a very big problem. Parents here think that I will not allow my child to have a job until he has like a degree like a and post graduation or like multiple degrees, Yeah, right? the मतलब ideologies के Yes, वो yes, सब yes. चाहिए कि traditionally. हाँ. You would not find this outside India. They encourage their children to start earning right after they're done with their school. So they go out service sector like customer service, like you'll see a lot of these guys working in McDonald's or in small Even the students going to abroad, उनके लिए भी first option is like if they are pursuing their degree, पार्ट टाइम गिग्स, part time चलेगा. हाँ, ठीक सब है. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ना इट इज लुक्ड डाउन अपॉन. पीपल सी कस्टमर सर्विस इज अ वेरी लाइक They look down हाँ upon it. हाँ Yeah. हाँ ये मतलब दिस इज नॉट व्हाट. एंड see, you have to understand this is not what you aspire to be like 4 years 5 years down the line, but you need to get a head start. Start from whatever you are getting. You will not get like a CEO job on your first day. You just need to go out, see and learn from the industry or the market. That's the first step. And if you get like a job that is in customer service, do that. Do it for the exposure, do it for some bucks also, if that's your current priority. So I am like a big advocate of starting small, starting early, and starting with whatever you have at the moment. Because see, the first step towards your career is the like start. आगे आप you will grow eventually. अगर आप शुरू में ही बहुत सारी restrictions लेके चलो अपने साथ कि नहीं I want to just enter into say मैंने data science कर रही हूँ, I am learning this machine learning, right? And I will only get a job in this field after I have done my post graduation and some internship from this big brand. Why? You're already restricting yourself. Yes. ना कि यही career path है and I have to just choose this direction only. But then you have to understand to reach there, you need to get some sort of experience in the middle. So, as I told you, I started with, the tuitions. It is not relevant to what I'm doing now. But what I am today, it is, whatever I've done in my life, I have been inspired by those moments, right? After that, I actually, did some proofreading. It was also a side hustle, and I continued it during my college. Like 3 years, I did proofreading. So proofreading is, you work with a publisher, and whatever book they are publishing, you kind of read if they the are final read na sort of. yeah. So you kind of make edits, make some changes, and suggest them. So that was what I did for 3 years, and it's not relevant to me now. But it gave me perspective of what I want to do, and it gave me a reality check of where I stand and where I can go.
So you need to start small, and you need to start early. And I feel like one thing I feel is that side hustles में या जो भी हम लोग passive income generate कर रहे हैं, whatever skills we develop from there ना, they are sort of transferable skills as well. Like they might not be relevant to your long term career goal, but वो आपकी I think journey में कहीं ना कहीं आपको उधर पहुंचने में help करेंगे, which is I totally agree to what you just said. And from an HR perspective also, like how do companies perceive employers who like अभी हम कॉन्सेप्ट तो साइड चिक का सुनते हैं ना कॉलेज में, पीपल आर ऑल के साइड चिक. सो आई फील लाइक पीपल शुड मोर फोकस टुवर्ड्स साइड गिग राइट नाउ, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव. सो हाउ टू from an HR perspective, how do HRs perceive employers who already have like a side gig, or maybe like उनका importance है कि हमें इसके साथ एक side gig भी करना है? Is that like a smart move, a green flag or a red flag? So there are two things that I would like to mention here. Number one, when you're a fresher, like you are in your college, do whatever comes your way, right? If there is a live project, if there is something like, a week's internship, a month's internship, whatever comes, that sort of experience will help you get a good job or a good internship to say. Now, HRs or hiring managers, they are looking for candidates who have like a relevant experience. For them, the first criteria when they look for candidate is, will they be able to do the job, right? And how do they assess that? By seeing if they've done something like that before. So you need to have multiple things that you have done and those transferable skills that you can that they can relate that with the next job. Now, this is when you are in your college, right? So it is always a good idea to do side gigs, side hustles while you're in your college besides your studies. I feel that is the best time for every student. Yeah. And I've seen candidates doing like back to back. Don't wait for your summer holidays or summer internships. Just do back to backs. I did like 3 to 4 internships, right? In 1 year. So imagine the amount of internships you can do, right? So a 2 months internship or a 1 month internship, just do whatever comes your way. If there are small projects that you can assist, small communities that you can, help, or any skill that you can use and, contribute in a project. So that is one thing. HRs, hiring managers, recruiters appreciate you working and, wearing multiple hats in your college. Now, when you're working, so there might be certain instances where the HR will consider it a red flag if you're doing 2 jobs. It's called moonlighting. You're doing, and the reason is because like you have to dedicate 8 hours a day to that job, and then where are you getting time to do another job? Yeah, your energy also gets split now. Also, if it's like a competitive business, so if that company that you're working for, say, is into e-commerce and you are working for a similar brand or a similar thing, so it's like right, that is not allowed. Okay. Now you have to understand, if you are not preaching that, you have to understand what's written in your contract. If most of the companies now are flexible, and new age companies, technology companies, they're flexible with candidates doing some side hustles. Right, I see a lot of people, making content, and then content creators, like doing their 9 to 5. So acceptable, because that's not clashing with their scope of business, or their like it's not a competition for them. So just make sure that you're not kind of getting yourself into some legal actions. Otherwise, and if you can, the best way is hide. If you can hide. I was just about to ask it, just to understand, like till the time your the side gig you're doing is relevant to your current job or the job you're applying for, it is safe to announce कि मैं ये कर रही हूँ और मेरा ये भी source of income है, so that might add to my current job profile as well. And till the time I feel if it is off track, so it is better to hide. Yeah, don't talk about it if you think that it's purely for your like for your leisure time, or maybe your just skill development के लिए है, या फिर it's just for a few bucks, just don't mention it, and you continue doing it, and managing your time properly. Just make sure that whenever you're doing all of this, you're not like taking time out from their work hours. So just make sure that's not happening, and you work and you give all the time to them.
what's theirs, and then you do it in your own personal time. So that's completely But fine. yeah. And you are not bound to talk about everything that you're doing on a personal level. Yeah, So because that's your personal choice. And अगर आप खुद करना चाहते हो, because if I talk about myself, so I think from my school time only, I was really fond of photography and graphics as well. तो मैंने like just वैसे ही for a like as a hobby से एक pursue करना start किया, and उस time पे I used to think I don't want to make a future out of it, I'm just doing it for fun. Yeah. But eventually what happened is that मेरा normally background बीच में journalism भी रहा है, content creation रहा है, सब रहा है. So that thing which I really thought उस time पे कि it's like a very side thing, I don't even have to reveal to anyone, that really helped me in this sense कि whenever my videos are being made, I know कि क्या ISO खराब है, क्या वहाँ पे Right. frames ठीक होने चाहिए, shots होने चाहिए. So I keep on dictating others कि मुझे video editing का भी है. So I mean, I feel yeah, all the skills are Yeah. transferable in their own sense. अगर आप उनको किसी भी तरह अपने जॉब की रेलेवेंसी के साथ right कर लो. So अगर पर एक तो अभी क्वेश्चन what I asked was कि if announcing this to your HR would be a red flag or not. Are there any red flags also in this industry, in the side income industry, which employers or fresh grads should look out for कि Yes. ये नहीं कि हर scam में फंस जाओ जाके a lot of scams happening out there. because I've seen many. A lot of scams like affiliate marketing, Yeah, exactly. That was my Right. like topmost red MLM, flag. or these network or marketing stuff. So you need to start reading more. First thing, you need to start researching. Yeah. See what's written about them on different platforms, read reviews, and then start something. Don't just go into it and regret later. Better be safe than sorry. पहले देख लो, सब कुछ अच्छे से रिसर्च कर लो, अगर ठीक लग रहा है तो go ahead and don't pay anyone to start something. Right? There are a Yeah, lot because I have also seen Instagram पे I've seen many gigs like this कि affiliate marketing तो मैंने इतना देखा है. Once I liked a post and Instagram का algorithm वैसा चलता है ना, once you like something, Yeah. it keeps on coming to your feed. And the simple logic behind these affiliate like whatever part-time jobs is, they make you buy a course. Yeah. And then because they are earning from that course, then you have to like buy that हाँ. course. You have to sell that course to multiple people. So it's like So they मतलब उन्होंने तो पहला अपना इनकम एक जनरेट कर लिया. और द थिंग इज कि उस टाइम पे मल्टीपल लोगों के साथ ये चीज़ रहती है दैट पीपल बिकम डेस्परेट ऑल्सो दैट दे जस्ट वांट टू स्टार्ट. कहीं से भी पैसा आ जाए, कहीं से भी शुरू हो जाए एक इनकम का सोर्स. सो व्हाट दे डू इज कि अच्छा मतलब एक एसेट और इन्वेस्टमेंट समझ के दे इन्वेस्ट एंड मोस्टली दीज थिंग्स कम आउट टू बी स्कैम्स. don't pay anywhere. शुरू में अगर नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ऐसे नहीं है कि आप ने सोचा कि अब से आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एंड अपॉर्चुनिटीज विल बी एट योर डोर. ऐसे नहीं होता है. ठीक है, इट माइट टेक सम टाइम. मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट योर skills, be very vocal, and like build in public. That's what I tell people. If you are, for example, a graphic designer, show on your Instagram, on your LinkedIn, on Portfolios, your yeah. Have your portfolio ready. If you are video editing, in video editing, same. If you are in content writing, same. Have your Medium account, like a profile on Medium, on LinkedIn. Start posting there. Build your own personal brand first. Then you can pitch it to others, because that's how you sell yourself, right? And this works for almost every role, right? So build your portfolio, or build something in public. For software engineers, if you're like if you just started working on a code, right? So be vocal about it, start posting about it on your LinkedIn or Instagram or whatever. So that might help. And So means side hustle doesn't have to be specifically कि you are earning some bucks तो तभी वो हो रहा है. वो You can हाँ you वो can देखो, skill ये ना development it is में a भी. process to get there, to get to the money part. You have to start with doing it without money also, and that includes doing it for yourself, doing it for say a friend or family and making your portfolio, or doing it for a client and showing him like a sample work. Do whatever it takes for the few to get a few क्या बोलते हैं उसको इसको यार, cut कर like we देना can even say like skill development भी रह सकती है इसके साथ एक. Yeah, do it for the skill development and also to build your portfolio. तो उसके लिए आपको स्टार्ट प्रोसेस तो यही है कि पहले स्टार्ट में आपको शायद you won't earn big, या फिर you won't even earn anything, right? But you will have something to show, and then look out for opportunities or internships or small gigs, side gigs, and then from those side gigs, small gigs, internship, you'll get a full-time job.
तो यही प्रोसेस है. नाउ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अलावा भी जहाँ पे आप देख सकते हो. द थिंग इज़ जैसे हमने बात की कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत करा होना चाहिए, पोर्टफोलियो कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए. सेम इज़ विद दीज लाइक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स. बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं. देयर इज़ अपवर्क, देन देयर इज़ फाइवर. अभी आपको व्हेन यू आर लाइक अ फ्रेशर, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट हैव एनी क्लाइंट, यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ वर्क, नो वन कैन वाउच फॉर यू, तो इट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, राइट. तो फ्रीलांस ऐसा नहीं है कि पहले दिन जाके इन योर अर्निंग बिग. आपको थोड़ा थोड़ा फ्री में करो, थोड़ा बहुत कम पैसों में करो, थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपने लिए बना लो, कुछ अपना कुछ करके दिखा दो. तो डू दीज थिंग्स, देन मेक अ प्रोफाइल ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स. रिसर्च कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हैं अपॉर्चुनिटीज़, उस प्लेटफॉर्म पे जाओ. और क्रिएटर्स और यू नो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको देखो. सी हाउ यू कैन गेट देयर, ठीक है, हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स. यू नो कोट लाइक सबसे कम उनको थोड़ा प्राइस कोट करोगे तो शायद यू विल गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स. हर एक उसके किसी के भी ये करियर स्ट्रगल के स्टार्ट में हल्का बहुत, आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट इज़ राइट टू से और नॉट, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन चलता है. एक्सप्लॉयटेशन नहीं कह सकते, जस्ट लुक एट इट एज you doing it for yourself first, and you have to understand this ki even if you're not getting paid enough for it, just do it for yourself. and you have to understand think it from a hiring manager's perspective. They want to hire someone who has done the work. अगर आपके पास कोई proof of work ही नहीं है, what will you show them, right? So when you are you can tell them that I've done this degree, you can tell them that I've done this course, but how, like, what is the like relevance of that course for where have you implemented those skills? That you're showing me that you've gained those skills, but I want to see your implementation. तो उनके लिए तो मुश्किल है ना टू जज यू और टू असेस यू. तो उनको असेसमेंट उनके लिए ईजी करने के लिए गिव देम योर प्रूफ ऑफ वर्क. एंड हाउ डू यू गिव इट टू देम? बाय योर पोर्टफोलियोज, by you know doing certifications as well. Certifications तो फिर भी gaining skill हो गया. मतलब प्रैक्टिकल दिखाओ उनको कि तुमने किसी प्रोजेक्ट के लिए किया है, या फिर तुमने किसी मतलब किसी के लिए इन योर फ्रेंड्स और फैमिली या खुद के लिए कुछ आपने पोर्टफोलियो बनाया, कुछ भी है. फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में तो आजकल इतना है कि यू कैन गेट एनी प्रोजेक्ट अपने सर्कल में ही. लाइक यू इवन इफ यू आप ब्रांडिंग कर रहे हो, यू आर अ डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इट्स लाइक फ्रेंड्स में, यार मेरा ये डिजाइन कर दे कुछ भी, यू कैन ऐड दैट थिंग टू योर पोर्टफोलियो. बिकॉज आई हैव डन दैट टू सो मेनी फ्रेंड्स के आई हैड मेनी ग्राफिक डिजाइनर फ्रेंड्स, सो उनका भी साइड हसल वाला पीरियड था. सो दे यूज्ड टू डू इट लाइक एक बार्टर होता था कि अच्छा मैं तेरा ब्रांडिंग कर दूंगा और मेरा पोर्टफोलियो के लिए मैं यूज कर लूंगा, इस चीज को मिल जाएगा. सो start small, start building your portfolio, and then use that portfolio to get your side gigs or freelance opportunities. आप देखोगे ना Fiverr और Upwork पे, people who are getting clients are the ones जिनका बहुत सारा मतलब आप देखो रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, पर वो बनने में टाइम लगेगा ना. आप फर्स्ट डे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्लाइंट्स आपके पास आएँ इफ़ यू डोंट हैव प्रूफ ऑफ वर्क फॉर देम. तो कोशिश करो कि उस पर वर्क करो. इट्स नॉट अ Rome was not built in a day. Exactly. So it will take time, but that time will teach you skills, that time will teach you everything. तो आपको वो करना पड़ेगा. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड्स, लाइक आजकल ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ किसी चीज़ पे बात करो चेंज होते रहते हैं. लाइक आर देयर एनी ट्रेंड्स ऑल्सो फॉर दिस साइड इनकम इंडस्ट्री, अगर आप अपने टाइम पे बात करो, एंड लाइक हाउ ईजी इट वॉज टू मे बी जनरेट इनकम फ्रॉम देम, एंड हाउ मे बी डिफिकल्ट? I think it's not about easy or difficult. 10 years back you would get a lot of offline opportunities as well. As I told you, मैं publishing houses में जाके I used to ask, I believed I was good at content writing, so I used to write content or write proofread for people. So I did that, but then things are moving online. So see, you can start working remotely as well. So it's like also safer and like more practical for you now that you can work from home and continue your studies or your full-time job. So as a for freshers, sorry to cut, आप बात कर रहे थे? नहीं, go ahead. And as freshers, just like a personal sort of suggestion I want from you, what is it for my freshers as well, कि what would be the better option for them to start remotely or an in-office collaboration? Like what is the better vibe for them to, I think, upskill themselves? Whatever float your boat. Okay. See, I've seen people,
I've argued with people who said that I want to work from office, I don't want to work from home because I think I will not get that exposure. Now I say you do you, but remote working has its own perks. Some people find comfort in working from home and they get exposure as well working from home. So not a big deal. If you want to work from home, good for you. If you want to work from office, good for you. Just make sure you're building skills. You're working at least. Yes. And सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है फ्रॉम वर्किंग रिमोटली कि यू are not able to work on your soft skills. Like you're not. Like the one concept I feel is missing is peer-to-peer learning. Yes. It's not and there. then also like how you communicate, and not just like it's different when you're communicating online and when you're communicating offline. It's different. So वो है issue थोड़ा सा जो मुझे लगता है in remote like work कि आपको थोड़ा सा वो exposure कम मिलेगा, but if you think you can get and you can kind of work on that while working remotely, it's the best thing. Like I personally love remote. Means it will like just like you said, like whatever saves your foot, whatever you feel, wherever you feel like you are growing, you are learning and exposure मिल रहा है, अच्छी opportunity है, पैसा भी मिल रहा है, सब है, so you should just go for it. But the main I feel the idea here is to start at least start. See बहुत बार ना ऐसा होता है, I've seen a lot of people not continuing because for them traveling and you know going to office every day or going to any मतलब work for that matter every day is like a struggle. For them that commutation, that's like a major problem. तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत draining है and every day it's a struggle for you, the work is not the struggle but the process of going to work and getting there. Yeah. So then look out for remote jobs. अगर आपको नहीं लग रहा है and you think you know like working from office works for you better, it energizes you, go for that. So both works. Any tips you would like to share like freshers के लिए कि even if you are looking out for ये side income का आप source देख रहे हो कुछ भी है, but what happens is I feel लोग starting में इतनी desperation होती है that they are like कि दिन में भी काम करना है, रात को भी काम करना है, like just for that extra money or bucks you get like a little too greedy for it. So like are there any tips for freshers कि वो burnout एक तो होने से बचाएं अपने आप को इसमें, like not turning your side income into a second job and साथ में वो profitable भी उनके लिए एक adventure enjoyable भी रहे साथ में. At this age I would say get greedy. You'll not stay greedy for long. You have to understand this greed or this hustle mindset is for a limited amount of time in you. You'll have that age where you would not want to hustle anymore. So enjoy it while it lasts. Do that. If you think you're getting greedy, have that greed. Do it for yourself. क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है एंड एट सम पॉइंट इन टाइम 10 years डाउन द लाइन यूड वांट टू हैव लाइक अ बैलेंस्ड लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस. सब ये चीज़ें बाद में आपको याद आती हैं. शुरू में आपको यू आर इन दैट फेज वेयर आई वांट टू. Doesn't it lead to a burnout stage as well कि creativity I feel like एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है when you use it way too much than your जितना आप कर सकते हो. I feel वी कैन से कि बर्न आउट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट व्हेन यू आर इन योर कॉलेज, आप कॉलेज में देखो ना, वी आर लाइक रनिंग ऑल द वे हियर एंड देयर, द एनर्जी इज वेरी वाइब्रेंट है ना. तो वहाँ पे भी तो हम एनर्जी, वहाँ पे भी तो हम ग्रीड आ रही है ना, मतलब टू लाइक डू एवरीथिंग अंडर द सन, सब कर देना है. तो वही वाली एनर्जी वहाँ पे भी लगा दो, क्योंकि वो एनर्जी इट विल नॉट लास्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो इफ यू थिंक दैट आई एम डूइंग अ लॉट एंड देयर इज लॉट ऑन माई प्लेट, अगर वो manageable है to some extent, if you're enjoying in that process, वो करते रहो continue, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद you will not be in a state physically, mentally to be in a and like even emotionally I feel as well. तो अभी अगर चल रहा है वो, तो उसको continue कर लो. This is the time when you are the most active. So do that, do everything under the sun. Yeah, for some years. I think वही freshers का energy उस time पे I think सबसे they are like a ball of energy at that point of time. And I think yeah, just like you said, if you channelize it like in the right direction, आगे जाके आपको ही help होएगा. Understand one more thing. So if you see a resume from an IITian or someone from who graduated from IIM or any regular college, the main difference would be
ऐसा नहीं है कि मतलब रेगुलर कॉलेज या नॉर्मल कॉलेज में आपने इंटर्नशिप्स नहीं करी होंगी या फिर आपने कुछ साइड हसल्स प्रोजेक्ट्स नहीं किए होंगे, यू डन दैट राइट. बट डिफरेंस पता है क्या है, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, दे नो हाउ टू सेल देम सेल्स. तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया ना, जो भी उन्होंने भी, दे ऑल्सो डिड यू नो लाइक अ लॉट ऑफ फालतू की चीज़ें इन कॉलेज, बट उनको वो उन्होंने कैसे उसको चैनलाइज किया टूवर्ड्स देयर नेक्स्ट जॉब इज़ अ स्किल दैट यू नीड टू काइंड ऑफ गेट. तो उन्होंने भी वही सब किया है कॉलेज में, मस्ती करी है तुम्हारी तरह. उन्होंने वहाँ से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर लिया. हाँ, तो their resume is like their brand. And it's not just because of that I am tag, it's because they know how to sell themselves. तो उन्होंने everything that they've done, if they've done any, say if they've organized any fest in their college, they will tell about it with metrics, with what they've, you know, what impact they could create, what skills they used to kind of, you know, like organize it. तो अगर आपके वर्ड्स और आपके स्टोरी टेलिंग ठीक है, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी और योर यू नो से योर रेज्यूमे ऑल टुगेदर. तो यही प्रॉब्लम है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उनका रेज्यूमे और हमारा रेज्यूमे इसलिए ही डिफरेंट है क्योंकि हम वो सब सेलिंग सही नहीं कर रहे हैं अपनी. हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट metrics, the insights, or you know, and metrics I feel matter a lot on a resume. yeah. वो सबसे पहले eye catching एक रहता है कि okay you're talking with numbers here, you're talking with everything. yes. तो कुछ भी कर रहे हो ना, make sure कि वो कुछ भी जो चल रहा है quantify हो सकता हो, quantify हो सके, and it should mean something to your later career. तो वो आपको story telling जो आपकी होनी चाहिए, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक इसमें वन टिप आई थिंक फॉर द फ्रेशर्स यहाँ पे मुझे ये चीज़ लगी है दैट यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर साइड इनकम एंड साइड हसल टू ओनली कि आप अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर यू आर लुकिंग फॉर साइड गिग्स. यू कैन इवन स्टार्ट इन योर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी बिकॉज आई थिंक जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सपोजर आपको वहाँ मिलेगा बाहर, इट इज़ मतलब इट्स वेरी हार्ड आउटसाइड, इट्स वेरी हार्ड. बिकॉज इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने कॉलेज टाइम में आई थिंक आई हैव अटेंडेड, आई हैव होस्टेड एंड एंकर्ड सो मेनी कॉन्फ्रेंसेज, फेस्ट, और मेरा मतलब बहुत बुरा हाल होता था स्टार्टिंग में. पर धीरे धीरे आई रियलाइज हाउ ऑल ऑफ दैट हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट इन माई करियर टुडे. तो आई थिंक मतलब वही चीज़ है जो आपने बोली कि इवन कॉलेज के एक्सपीरियंसेस को भी आप सेल कर सकते हो अपने रेज्यूमे पे एज अ साइड इनकम और एज लाइक अ ट्रांसफरेबल स्किल. तो दैट ऑल्सो हेल्प्स. इट्स ऑल्सो अ प्रोजेक्ट. यू नीड टू मेक श्योर दैट इट कम्स आउट एज समथिंग दैट यू हैव डन एंड दैट क्रिएटेड इम्पैक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोजेक्ट दैट यू डिड. तो अगर आप वो स्टोरी टेलिंग ठीक कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो, डू वट एवर यू नो कम्स योर वे. तो यही सीन है. ओके, आई थिंक आज हमने काफ़ी ज़्यादा साइड इनकम, साइड हसल, मुझे मेरे कॉलेज सब, हमारी कॉलेज सबके आई थिंक वो साइड हसल के डेज हमारे भी रिवाइव हो गए. सो एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द इनसाइट्स और जो भी सब दिए, बिकॉज आई फेल लाइक दिस टॉपिक वाज समथिंग जो इतना डिस्कस नहीं होता था, बट इट हैड टू बी डिस्कस बिकॉज लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं कि यार जॉब लग जाए, किसी तरह जॉब लग जाए. दे आर नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि आपको जॉब से पहले आप बहुत कुछ और कर सकते हो, एंड यू कैन इवन इफ़ यू स्टार्ट एट एनी पॉइंट, 13, 14, 15 साल की उम्र में आप स्टार्ट करो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर लॉन्ग टर्म गोल्स. एंड अभी आई थिंक काफ़ी हमने ऐसे अच्छा ज्ञान की बातें कर ली. आई वुड लाइक टू एंड दिस बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट ऑन अ फन नोट. तो मैंने एक छोटी सी गेम करी है प्लान आपके लिए. इट इज़ गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड, फ्रेशर्स एडिशन. सो हम नॉर्मल गेम्स तो देखते हैं, बट इट विल बी एन इन्फॉर्मेटिव गेम, इन्फॉर्मेशन इससे निकलेगा. सो मैम, आर यू रेडी? Yeah. Tell me. Okay, so very quickly, I'm starting with the rapid fire round. Rapid fire round, freshers edition. One skill every fresher should master. Storytelling. Freshers' worst mistake during an interview can be? Not preparing your tell me about yourself. I can agree to that. Biggest resume deal breaker? Profile summary. The one at the top. Yeah. Big salary or a great learning opportunity? What should a fresher go for? Both. But yeah, if I have to choose one, Yes. learning opportunity. Learning opportunity. Best first day at work tip? Talk to everyone that you kind of Network. meet. Yeah. Okay, best way to deal job rejection? Apply to another. Just don't sit over it. Let's just grieve about it. Yeah. Okay. And lastly, one word to describe the upcoming freshers energy. They are not lazy, they are smart.
That's good. That's a compliment for all the freshers. Okay, secondly, this or that, very quickly. Resume or cover letter, what makes the first Resume. impression? Always. LinkedIn profile, nice to have or must have? Must have. Okay. Salary hike or job title promotion? Salary hike. Job title is a facade. Like, don't get into job title shit. Okay. Networking online or networking in person, what is better? Both. Both. You can't do without the other. Okay. Remote work or in office collab? Whatever works for you. Work for a big brand or work for a small startup? Small startup any day. Okay. Team player or solo star? Team player. Job security or career adventure? Career adventure at the start, and then job security when you are in the mid career or you're When you have established. Yeah. Lastly, describe interviews, art or a strategy? It's a mix of both art and strategy. So how you tell your story is an art, but how you kind of say the right words at the right time is the strategy. So it's a mix of both. Yeah. So then that was it. This was the this and that round and the rapid fire round, Freshers edition. And ma'am, कैसा लगा podcast करके? बढ़िया लगा? So guys, this was the end of our first podcast with Charul Sharma, who I have mentioned a great career coach, and I think आज हमें उनके साथ काफ़ी सारे pointers मिले हैं साइड इनकम को लेके, पैसिव इनकम, साइड हसल, एज वेल एज आप अपने ट्रेडिशनल एक जॉब सोर्स को भी किस तरह लाइफ में और इन्हांस कर सकते हो थ्रू साइड हसल्स. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड इफ़ यू गाइज लाइक्ड इट, do like it, watch it, share it with your friends, comment about it, and let me know in the comments if you guys want to know any other specific topics जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, and stay tuned for more such episodes.